अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बस आपका चंद मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। और रोज़ाना आप देखते होंगे, बस कुछ चंद अहम बातें आपके सामने आपसे शेयर कर देता हूँ। और ज़रूरी भी है, हक़ है कि अगर किसी को कोई जानकारी हो तो दूसरों तक पहुँचाना चाहिए उसको। आज मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा, कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँगा आपको, ये मसाइल का हल किस तरह से निकले। पूरी दुनिया आज मसाइल को हल करने में लगी हुई है, और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और अपने 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 इमेजिनेशन के हिसाब से, और अपनी सलाहियत, अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से, अपने डिस्प्यूशन और अपने किसी भी इशू का वो सॉल्यूशन निकालता है, हल निकालता है। और हमें भी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुना होगा न्यूटन नामी एक शख्स को, जो बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस साइंसदान था, साइंटिस्ट था। क्या हुआ था कि उससे किसी ने पूछा कि भाई, आपने तो पूरी दुनिया को मुतासिर करके रखा है, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप मुतासिर हुए किसी चीज़ से या किसी से? तो उसने कहा, हाँ, मुझे मुतासिर किया, लेकिन मेरे ही खादिम ने किया। तो पूछने वाले ने पूछा, भाई कैसे हुआ है? तो बोलने लगा कि मैं एक बार हीटर के सामने बैठा हुआ था, गर्मी हासिल कर रहा था। तो थोड़ा सा मुझे गर्मी ज़्यादा लगने लगी। मैंने अपने खादिम को बुलाया कि भाई इसको धीम कर दो। तो खादिम भी बोलने लगा, भाई आप भी अजीब इंसान हो, आपको थोड़ा सा अपने आप को वहाँ से हटा लेना चाहिए, थोड़ा सा। बस जो भी हीटिंग थी, ज़्यादा गर्मी लग रही थी आपको, तसल्ली हो जाती, कंफर्ट हो जाते आप। तो उसने कहा, वाह क्या बात कह दी आपने। तो उसने कहा कि ये जो मेरे खादिम ने जो बात कही, मैंने अब तक जिसको भी इम्प्रेस किया और इंस्पायर्ड किया अपनी बातों से, उन सारी बातों में इस बात को मैंने अव्वल दर्जे पर रखा, फर्स्ट स्टेप पर रखा कि वाकई ये बात है और इसके अंदर दम है। तो उसने एक बात कही अपनी लाइफ में कि अगर आपको आपको आप रिस्क की तंगी का शिकार हो, आपकी आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल्स हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप क्या करो कि अपने आप को ख्वाहिशात की अंगीठी से दूर कर लो। क्या बात की उसने, अपने आप को ख्वाहिशात की अंगीठी से दूर कर लो। यकीनन यकीनन सारे मसाइल का हल बस इसी में, सारे मसले हल हो जाएंगे आपके चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में। तो बहरहाल हमको ये करना चाहिए। मैं आपको I'm presenting my presentation in English language, so daily to practice as a speaking. So I am responsible person of a computer and English speaking center. So I'm representing now the center, and mostly boys come here to get the knowledge and information about the computer and about the English language. So yes, that's why as practice I'm uploading different types of videos on the internet. So especially for my pupils, for my students who are eager to speak English, who has so inspiration for speaking English. So in English, so I listen to you the story. Newton. So he was a famous scientist in the world, and he's accepted in in entire world. And once anybody's asked him, so Newton, you impressed and you inspired all the world, and you're acceptable in entire world. But even you affected and you inspired any person with your act, with your action, and with your deeds. So he said, yes, it happened in my life, but only one time. And what was the time? That when I was taking the heatness from the heater, and I was sitting near the heater. So suddenly uh, I felt so much heatness that I called my servant to decrease the heatness. So he said to me that what are you, and how amazing personality you are. So please, you should move yourself a bit from the heater, so you will you will be saved, and you'll feel so comfortable in your life. But this talks and this suggestion what servant gave me, that I become more affected and more inspired, and all my talks and all my suggestion which is going on in all world, so I keep this suggestion on the top. So it's my suggestion to all of you, our dear friends and dear viewers. If you are suffering from the food shortage in your life, and if you're disturbed in your life, so please, I'm requesting you kindly, please move a bit yourself.
move with yourself and isolate yourself from the furnace of desires. Stay away from the desires, from the different varieties of desires, and inshallah you will be saved in your life. And so happiness and gladness you will feel in your life in always and forever. So thank you so much. Assalamu alaikum.